integration is finished. We will revise this chapter. Don't worry. Now, application of integration is also finished. And thirdly, differential equation was going. So although I have finished with the homogeneous equation, but still I am going to start with the homogeneous equations. तो उससे हम शुरू करेंगे differential equation से. In differential equation, the entire topic will be revised. So there is no way to come in panic. Clear? We have a time. Our probably the next exams will be in April and it will be subjective. ये clear है. Clear. So exams will be in So we will start with homogeneous equations. Clear? So anybody want to say or want to discuss anything or want to inquire anything, you are welcome. But my request to you is attend your classes regularly, because this is full and final time now, which will help you to prepare your competitions also. Fine. And if the exams will be subjective, so we must have the knowledge how to do the subjective papers. Anything anybody want to discuss? Mankiran, Chapchap, Bhavya Sharma, Prachi. Are you getting my voice? Yes, Aryan, Bhavya, Chapchap, Mankiran, Prachi. Are you people getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So, oh, great, great. So, anything which you want to discuss in regard to the next term or anything else which you want to discuss? No. Chaliye. So, homogeneous equation. What is this homogeneous equation? Basically, सबसे पहले, which equation you will say that it is a homogeneous equation? For example, I'm going to discuss with you the example 15 of NCERT. ये saying सबसे पहले क्या है, आपको ये प्रूव करना है कि ये वाली इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस है. फिर इसको सॉल्व करो. तो whenever we will solve the differential equation, the best part to solve the differential equation is कि x वाली टर्म्स dx के साथ आए और y वाली टर्म्स dy के साथ आए और उसके बाद हम उसकी इंटीग्रेशन कर दें. अगर x वाली टर्म्स dx के साथ नहीं आती, फॉर एग्जांपल x is to dx ऐसे बन के नहीं आता और y वाली टर्म्स dy के साथ नहीं आती, then we have to do the treatment of this differential equation. This treatment is homogeneous. This treatment can be with integrating factor. This treatment can be with other things. तो उसको हमको ट्रीट करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हर तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर. तो पहले तो ये है कि होमोजेनियस कैसे हम इसको देखेंगे. सबसे पहले बात, you have to isolate dy by dx to one side and you have to keep x and y terms on other side. First step is this. This is step 1. Keep dy by dx to one side and rest of the terms to other side. उसके बाद x को आप change कर लो, some scalar multiple of the same variable. X will be changed to lambda x and y will be changed to lambda y.
This is my second step. Step 2, x will be changed to lambda x and y will be changed to lambda y. So my dy by dx will be now x has changed to lambda x. So this is lambda x plus this is lambda y over this is lambda x minus this is lambda y. अब आप देखिए, you can take lambda outside, so x plus y upon this is x plus 2y, sorry, this is 2 x plus 2y upon x minus y, because I have taken lambda outside. So lambda goes with lambda, which implies my dy by dx. This is equal to x plus 2y upon x minus y. So that means that I am getting the same equation from which I have started. I have started with this equation. So that means if after the treatment, which treatment? After changing x into some scalar multiple of x and y into some scalar multiple of y, I am getting the same equation. That means what it means? The equation is homogeneous, which implies equation is homogeneous. एक नंबर के लिए this is very important because they will give you an equation and they will say you check it whether it is homogeneous or not. So सबसे पहले बात, आपको कैसे चेक करना है एक इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं? आपको dy by dx को आइसोलेट कर लें एक तरफ पे, बाकी टर्म्स को इकट्ठा कर लें दूसरी तरफ पे. Change x into some scalar multiple of x and change y into some scalar multiple of y. Substitute in the equation, take scalar common, see whether it can be cancelled from numerator and denominator and whether you will get the original equation again. Yes, if you will get the original equation, that means the equation is homogeneous. So this is the first step. Now, what is the second step? Second step is to solve. So this is step second. How to solve? अब जब भी आपको यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बेटा प्लीज रिस्पॉन्ड, बिकॉज इफ यू विल नॉट रिस्पॉन्ड, नो सर, ओ ग्रेट, हर बच्चा रिस्पॉन्ड करे, ठीक है. असैनी, अभिषेक, नो सर, ग्रेट, भव्या, बेटा अपने आप ही बताना है बिकॉज आई वांट अ लाइव क्लास, फाइन, और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. अब एक नंबर का ये क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस. अब उसके बाद आता है इसको सॉल्व करना. तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, विच एवर इज डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे y डिपेंडेंट, जनरली x और y में y डिपेंडेंट है बिकॉज वी विल ट्रीट इट एज अ fx and there is a dy by dx. तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डेरिवेशन ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो ऊपर y है तो y क्या हुआ मेरा? डिपेंडेंट. x क्या हुआ? इंडिपेंडेंट. क्लियर? डिपेंडेंट हमेशा ऊपर रहेगा, इंडिपेंडेंट हमेशा नीचे रहेगा. तो जो भी मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैंने एक्सप्रेस करना है v और p और q इज टू x. तो ये मेरा कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट. ये मेरा कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट. मान लो यहाँ पे आपके पास आ जाती dp ओवर dq, तो p आपका क्या हो जाएगा? p विल बी योर डिपेंडेंट वेरिएबल, q विल बी योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. देन यू विल सपोज p इज इक्वल टू v इज टू q. बट जनरली क्या होता है कि पेपर में dy by dx की फॉर्म में ही क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन के लिहाज से अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता कि p minus q is to dp over dq is equal to p plus 2q. तो मेरा p क्या होता है? ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. तो मैं p is equal to v is to q पुट करता. क्लियर? तो ये बात का ध्यान रखना. अच्छा, dy by dx, तो differentiate both sides with respect to x. So dy by dx which is equal to v as it is, x का derivative 1 plus x is to dv by
dx. So dy over dx, which is equal to v plus x is to dv by dx. Now, this is my first equation. I replace the value of dy by dx and the value of v in this equation. So my dy by dx, this is v plus x is to dv by dx, which is equal to x as it is, plus y. 2 is to vx upon x as it is minus y. This is vx. So v plus x is to dv by dx, which is equal to, take x common in the numerator and denominator. Take x common. This cancels. So which implies v plus x dv by dx, which is equal to 1 plus 2v upon 1 minus v. So x dv by dx, which is equal to 1 plus 2v upon 1 minus v minus v. X dv by dx, 1 plus 2v minus v, 1 minus v upon 1 minus v. So simple, we have to solve for the separation of variable. मेरा target क्या है कि I have to separate the variables, nothing else. So this is 1 minus v. So x is to dv by dx. This is 1 plus v square upon 1 minus v. अब देखिए, एक पूरी की पूरी टर्म मेरी v के साथ रह गई और एक मेरी पूरी की पूरी टर्म x के साथ रह गई. तो मैं v वाली इस तरफ ले आऊं, x वाली उस तरफ ले जाऊं. तो ये क्या बना, 1 माइनस v square plus v plus 1 is to dv, which is equal to dx upon x. अब वेरिएबल सेपरेट हो गए. x is with dx and dv is with v. Now I will integrate. Clear? So is it clear up to this step? My treatment is change. What is the first step? Put vy is equal to vx. Wherever there is a y, substitute y as a vx and differentiate both sides with respect to x. So my y is equal to vx. I have differentiated both sides with respect to x and I get the value of dy by dx. ये देखिए. Now this dy by dx is replaced with this dy by dx. And the value of y is replaced by this value y. So it becomes this is equal to x plus 2vx, x minus vx. So इसको solve करके I got this. I hope this is clear with everyone. Aryan? Yes, sir. Aryan? Yes, sir. Yes, sir. अभिषेक, भव्या, ओके, ग्रेट. तो यहां के बाद मेरा सिंपल रह गया क्या? Now I have to integrate. So here you have to revise your chapter of integration. हम क्या करेंगे? कोशिश ये करेंगे जो हमारी सैटरडे को क्लास है उस क्लास में साथ में पुराना जो हम कर चुके हैं उसकी रिवीजन शुरू कर देंगे ताकि थोड़ा थोड़ा वो भी चलता रहे. तो अब ये मेरी इक्वेशन जो है वो क्या है? लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक. ये देखिए, दिस इज माय लीनियर, दिस इज माय क्वाड्रेटिक. तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? पुट लीनियर इज इक्वल टू p इज टू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस q. This we did in integration. Linear over quadratic, this is linear is equal to p. P and q are the constant, is to derivative of quadratic is to q. Now I have to compare to get the value of p and q. So p, this is 2v plus 1 plus q. So 1 minus v, this is
So my P plus Q, this is constant. This is equal to 1. If I'll compare both sides. Now 2PV is equal to V. So that means 2P is equal to minus 1. The value of P is minus 1 by 2. And Q is equal to 1 minus P. So 1 plus 1 by 2. So Q is equal to 3 by 2. So put the value of P and Q in number 2 and integrate both sides. All of you, it is a request that please maintain your notebooks, because this notebooks I will use. I will bifurcate your marks of projects. कुछ का थोड़े marks का project रख लेंगे, बाकी marks की notebook रख लेंगे, and this notebook I will keep for my record. तो उसके लिए मैं आपको marks assign कर दूंगा, ठीक है? जैसे 10 में से 3 नंबर मैं notebooks को assign कर दूंगा। तो आज बिल्कुल शुरू है, तो जो हम क्लास में काम करते जाते हैं एनसीईआरटी का, तो सारे का सारा जो या होमवर्क जो भी होगा वो आप साथ साथ इसको मेंटेन करते रहें, सो दैट आई विल कीप योर रिकॉर्ड, बिकॉज सेकंड टर्म जो है इसमें आपके प्रैक्टिकल भी एक्सटर्नल होने हैं, और ये रिकॉर्ड जो होगा बोर्ड के लिए रखा जाएगा। हाँ, तो उसके लिए सो दैट यू कैन गेट द क्रेडिट। नोटबुक मेंटेन करनी आसान होती है, तो उसको साथ साथ में मेंटेन करते जाए। Now this is 1 minus B. The value of P, this is minus 1 by 2. Q, 3 by 2. Now divide both sides by V square plus V plus 1. स्मृति में मेरी क्लास चल रही है। So this is 1 minus V upon, but quickly I will finish. I know that you have your next class. This is minus 1 by 2 integrate. Three by 2 is to dV upon, ये देखिए, तो if I will substitute it as a t, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो I will write it as a 1 by 2 log, because the derivative is in the numerator. Clear? Plus इसको मैं completing the square करके solve कर लूंगा, and वो सारी के सारी वैल्यू वो यहाँ substitute हो जाएगी. Fine. So try to complete this. We will carry on tomorrow. Fine. So any doubt to any student? आर्यन, कुछ पता चला? भव्या? No doubt, sir. आर्यन, जब जा आप, कुछ पता चला बेटा? ओके, मनकिरण, प्राची? Yes, sir, no doubt. Great, great. So see you tomorrow. Thank you. Thank you.